माइक तो माइक उसके बिना हो जाता है। Good evening, boys and girls. Welcome to our Sunday YouTube live session. Kindly keep posting your questions. Pankaj, Jai Hind. Hari, Jai Hind. Manwar, Jai Hind. Congratulations for your recommendation. I hope No Frills Academy was of some help to you. Kindly confirm. Sir, one person is Is asking. asking Journey for India. I'm in class 11th. Can you please give some tips? I have given tips on all these things. If you just check our YouTube channel, you will be able to get answers to these things. Broadly speaking, I will tell you, uh, you got to focus on four major issues. Your first most important thing is that your academic competence in physics, chemistry, and mathematics should be good, and your English should be good. So these things are most significant. Thereafter comes for you its physical fitness to get it used to exercising regularly. Often I have noticed it happens that students in 11th and 12th classes keep running after extra tuition classes and they totally give up on their exercising. Don't do that. And my suggestion is don't run for these extra tuition classes also because they're not that beneficial. You should take any extra help only in case you have a problem in any particular subject. Fine. And as and when you come, either you get used to reading newspaper regularly from now onward, or when you are proximate to your SSB, about 2 months, not SSB rather, sorry, to your written exam, at least 2 months prior to that, start reading stuff related to general knowledge like competition, success review, or any other material which you find comfortable, because that is something what I had done to clear my exam, and thereafter remain in touch with general knowledge. So these are the things which should suffice. Now, this is something which you can manage on your own. In case you are not that confident, then it will make sense to join our guidance program. And, in that, I will assess you and we will be able to identify as to what are the specific areas for improvement, and then we'll make a comprehensive plan for improvement over a period of time, managing your daily routine and things like that.
And with the group activities, you'll get well groomed for the written exam as also the essay. So this is what it is. Both options are good. The second option may be little better. Fine. So that is what it is. Yeah. Thank you. Lakshay. I have SSB on 26th August. What should my routine be to excel in that? See, SSB is very proximate, so there is nothing much you can do as far as your major things are concerned. That is your academic ability, your English, or your physical fitness. Do remain in touch with your exercise, but don't expect any major improvement in that. The major focus area for now should be your general knowledge. So focus on that and try and improve upon these aspects. Watch our video on the YouTube channel about the screening process. Understand it well. Apply the methodology. You may consider buying our book also because it will give you a comprehensive picture not only about the SSB process and what all you should be doing. A lot of misconceptions would get clarified, and you will be able to evolve, a comprehensive and sensible roadmap for improvement. Though nothing major is feasible, prime focus should be on general knowledge. So that is what it is. और OIR चोआर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो हमारा वीडियो देखकर स्क्रीनिंग वाला उस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करके चलो तो दैट इज ठीक है बेटा थैंक यू What qualities need to be shown in lecture? नहीं बच्चा क्वालिटीज ऑलरेडी दिखाने के चक्कर में मत रहो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक है ना हरी दिखाने के चक्कर में कुछ भी मत रहो जेन्युइनली क्वालिटीज को इम्प्रूव करो and what gets demonstrated in lecture 8 is your ability to communicate in English and your general awareness. These are the major issues. And third thing is confidence, which is directly correlated to these qualities which I talked about, that your communication skills and your general awareness. तो इन दोनों पे फोकस करिए प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो दैट वुड बी हेल्पफुल तो दीज आर द थिंग डोंट ट्राई टू कि शो करना है मैंने शो नहीं करना है जो असलियत होगी वो पता चल जाएगी ठीक है बेटा या थैंक यू अभिषेक विल बी अपेयरिंग टू फॉर एसएसबी थ्रू एनसीसी स्पेशल एंट्री ठीक है भाई तो करिए अपना तैयारी my advice to all people who are going through NCC is not to bank solely on the NCC entry but to prepare well for the written examinations clear the written examinations with good marks then your chances of getting through NCC would be better if you are unable to clear the written exam then your chances of getting through NCC would be very remote तो दिस इज व्हाट इट इज बाकी चीजें तो वही हैं चार चीजें जो मैंने बताई उस पर फोकस करिए या दैट्स इट अभिषेक थैंक यू अंजने राय I have been getting conference out for NDA and TS entries. Upon introspection, I found that my psychology is lacking. नहीं भाई ऐसे नहीं होता है साइकोलॉजी वगैरह नहीं गड़बड़ होता है आपकी जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन्हीं पे फोकस करिए साइकोलॉजी में क्या हो जाएगा साइकोलॉजी में आपका क्या होता है पिक्चर देख के आप स्टोरी बनाते हो उससे आपका कॉमन सेंस और जनरल अवेयरनेस का पता चलता है एंड सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज का पता ही चलता है कि आप ट्रेन में जा रहे थे टिकट खो गया तो क्या करोगे आग लग गई तो क्या करोगे कोई गिर गया तो क्या करोगे थिंग्स लाइक दैट तो उसमें कोई ऐसी बड़ी साइकोलॉजी की चीज नहीं होती है ठीक है ना आप मेरी बुक पढ़िए इट विल हेल्प यू बट सिंस यू आर सेइंग कि आप कई बार जा चुके हो तो जो है आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए इट विल बी बेटर अभी यंग है टाइम इज एट हैंड तो अभी बात बन जाए तो बहुत अच्छा है नहीं तो
at least CDS AFCAT के लिए you would be in a good position to make it. So joining our program would be the most sensible idea. ठीक है बेटा? Yeah, thank you. लेक्चरेट एंड जीटी कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। अंग्रेजी ठीक होनी चाहिए, जनरल नॉलेज ठीक होनी चाहिए, तो इनसे ये चीजें टैकल हो जाती हैं। प्रैक्टिस कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, तो दैट इज द अदर थिंग यू कैन डू। एंड ऑफ कोर्स ऑप्शन इज देयर टू जॉइन आवर गाइडेंस प्रोग्राम where you get a good platform to do these things in an organized manner, and you can improve gradually over a period of time. कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहेगा। तो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, या थैंक यू गौतम। ऋषभ राणा got conference out, and again I have my NDA in 20 days and I'm very relaxed. Is this good or bad? It's very good. Being relaxed implies that you're confident, you're not nervous, you have good self belief, and I'm sure your competence would also be of a good level. So ऐसा ही attitude रखिए. Continue with the same attitude for an SSB also, and God willing things will work. ठीक है बेटा, it's a good thing. God bless. How to be consistent? Consistence नहीं, consistent होगा word. तो देखिए ये चीजें मोटिवेशन से रिलेटेड। अगर आपका मोटिवेशन अच्छा होगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ विनेश फोगाट। अब सी इतने चैलेंजेस थे इस लड़की के लिए। शी वाज फेसिंग एन एथिकल डिलेमा and she was in a leadership role as far as young wrestlers are concerned, the junior girls and all who looked up to her, and she felt that she must be a good role model for them, so she fought for them, fought against the system. And you know how much time and energy it would have taken. Then this girl had to go down in the weight category from 53 to 50, which itself was challenging. And ultimately, the problems came up in that. But see her effort. ये भी किया उसने, फिर भी disciplined रही, motivated रही. So much so that the Japanese girl who was the world champion and number one and all that never lost a bout for 82 consecutive matches. Her Vinicius' motivation and determination was good enough to overcome such an opponent despite the challenges. तो किया क्या नहीं जा सकता, but the starting point is motivation. मोटिवेशन नहीं होगी तो बात नहीं बन सकती है। मोटिवेशन होगी तो आप अपना जो प्लान बनाएंगे उसे फॉलो कर पाएंगे। यही हम अपने स्टूडेंट के साथ देखते हैं। जो मोटिवेटेड होते हैं वो कर पाते हैं, जिनकी मोटिवेशन कम रहती है फिर then they are lax, they are not consistent, and then they do not improve also as much as is required, and often they do not get success also. तो कंसिस्टेंट रहने का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है। आपकी मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एक लड़के का इंटरव्यू सुन सकते हैं of Arjun करके उसका नाम था, quite a few years back. You can locate his interview, do or die routine. तो उससे होता नहीं था रूटीन वगैरह फॉलो, तो मैंने बोला अर्जुन ऐसा ही सोचो कि एक हफ्ते बाद यू आर गोइंग टू डाई, एंड एटलीस्ट प्रूव टू योरसेल्फ कि तुम एक हफ्ता जिंदगी में मरने से पहले अपने को तो प्रूव कर सकता था कि मैं एक रूटीन फॉलो कर सकता हूँ, अदरवाइज क्या आदमी है तू। So he did that. When he did that for 1 week, I said, well, when you could do it for 1 week, you could do it for one more week also. And in this manner, he could do it. So, I mean, you can evolve your own methods and all that. But motivation is the prime thing. ठीक है बेटा? Yeah, thank you. So, how to deal with monotony of routine? Sometimes it gets really boring doing same thing over and over again. Yeah, it is there. These problems are there. You see a guy working on the assembly line in a car manufacturing company or any automobile manufacturing company, that guy would be required to work on his workstation
the motorcycle or the car will come to him. He'll have to tighten those same nut bolts, fix the same thing in that required, 35, 40 seconds. So monotonous hai. But I mean, society needs him to do that job and he has to do it. And by doing it again and again, he has developed, refined his efficiency in that field. भाई क्या कहते हैं, बुमराह भी तो वही बॉल करता रहता है उधर से ही उतने स्टेप भागकर एंड सेम विराट कोहली इज डूइंग, so he is also batting in the same manner. कोई इतना drastic change तो नहीं हो रहा, but since it is sport you find it exciting, but it is since it is a work you tend to feel it as monotonous. अब खेलने वाला चेस भी खेल रहा है for just 6, 6, 7 hours. That chap is finding it interesting. धोनी would be finding his wicket keeping interesting. वो भी same है, ball collect करता है, bowler को फेंकता है. So, this is how you look at it. If you listen to the interview of, not the interview, a talk which Colonel Ajay gave us recently, it has just been uploaded. And I was, remarking in that what I note about him, he is my senior. I find him as enthusiastic today. He will be plus of 65 because I'm myself running 65th year. That he does a lot of work and he has a lot of enthusiasm for doing whatever geopolitics, military history, writing fiction, engrossed and happy doing his things. तो जो भी चीज आपको करने को मिली है या सोसाइटी ने आपको दी है, उसको मोटिवेशन रखिए और एनर्जेटिकली करिए, तो वो मोनोटोनस आपको नहीं लगेगी. इट विल लुक लाइक प्ले. नट बोल्ट टाइट करना भी जो है प्ले जैसा लगेगा आपको. मेंटल स्टेट है, अगर आप उसको मोनोटोनस ले तो धोनी का काम भी मोनोटोनस है और एक जो है असेंबली लाइन में काम कर रहा है नट बोल्ट टाइटन करने का, दैट कैन आल्सो बी अ प्ले. So it is here in the mind how you think, So that is how. Those are my views. Yeah. So you can do that. It is possible. Yeah. Thank you. सर आप मेजर जनरल यश मोर से जैसे वीडियो बनाते हो. थैंक यू. जनरल यश मोर is an inspiring figure and he is a friend. I like him. I have regards for him. Thanks for the compliment. भाई उनका क्वालिटी वगैरह मेरे से काफी अच्छा होता है यार. ज्यादा प्रोफेशनल है जनरल यश मोर. आई एम लिटिल, जैसा हमारा नेम है ना, नो फ्रिल्स एकेडमी, में कंपैरेटिवली लेड बैक हूँ. आई मीन दैट्स माय पर्सनल असेसमेंट. Okay. So what to do about grammatical mistakes in story writing? What's the best approach towards a negative story? अच्छा, बहुत सारी चीजें एक एक करके लेंगे. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट आपको करना पड़ेगा. इसके बिना बात नहीं बनेगी. My experience tells me that 85% of the aspirants appearing today deserve to be rejected because of their poor English. Only 15% persons need to be checked for overall stuff. तो आप देखिए, इसको सॉर्ट आउट करिए. Once again, motivation is the thing and your sense of being careful and not casual. So that is the first thing which you can do to resolve. Of course, हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करनी है तो हमारे पास हिंदी मीडियम वाले भी आके सुधर गए हैं. बट सुधरे तभी हैं जब उन्होंने इंटरेस्ट लिया एंड दे वर कंसिस्टेंट इन सेंडिंग अस रिटन वर्क एंड टेकिंग रेगुलर पार्ट इन द ग्रुप एक्टिविटी. So that is as far as the अंग्रेजी part is concerned. Now let us see other part. क्या आपने बोला नेगेटिव स्टोरी का क्या करेगा? अच्छा, someone is faint and a girl is crying. अच्छा अच्छा, पॉजिटिव होगा. ओके, तो चलो, अगर कोई बेहोश होके गिर गया है तो चांसेस है कोई और दिखाया होगा उस पिक्चर में, तो उसको मेन कैरेक्टर बनाइए एंड हाउ ही हेल्प्स आउट दिस पर्सन, मेक अ स्टोरी अराउंड दैट, so that would be a positive story. अब आपने एक बोला कि एक लड़की रो रही है, तो लड़की रो रही है तो क्या हो सकता है? यंग गर्ल है, मे बी एग्जाम में फेल हो गई, कोई चीज हुआ,
मतलब कोई काम था, she got scolded or something didn't work out, it did not go okay. So what she will do? She will take it as a challenge and she will make effort to improve upon that. ना मान लीजिए आप ही क्या केस ले लेते हैं कि अंग्रेजी ठीक नहीं, अंग्रेजी में मार्क्स कम आए, टीचर स्कोल्डेड के तुम्हारा ग्रामर अच्छा नहीं, अभी वो क्या करेगी? वन इज टू कि भगवान ने हमको ऐसे ही बनाया, दैट्स अ बैड एटीट्यूड। वो ये लेके चलेंगे भाई मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, टेक स्टॉक ऑफ अ लाइफ, start getting hold, building vocabulary, building up grammar, and working consistently on a regular basis. And then she will be able to improve her expression and उसकी बात बन जाएगी and then naturally marks शार्क्स भी ठीक ठाक आ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव स्टोरी हो गई, इसमें क्या है? तो लाइक दैट एनीथिंग नेगेटिव स्टिमुलस जो है, कोई अगर मर गया है तो क्या होगा? जो जिंदा है वो लोग अपनी जिंदगी को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। लाइक ऑफ यंग पर्सन इज देयर, आपको लगता है उसका पेरेंट हैज डाइड, फादर हैज डाइड, तो यंग लड़का क्या करेगा? अभी मोर रिस्पांसिबिलिटीज विल कम अपॉन हिम, ही विल हैव टू टेक केयर ऑफ हिज मदर, मे बी यंगर सिबलिंग्स आर देयर, तो उनको कैसे करेगा? अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो पार्ट टाइम काम करना शुरू करना पड़ेगा, इस तरह की चीजें करेगा। ऐसा स्टोरी बनाइए, बस सिंपल सी बातें हैं। दीज आर ऑल पॉजिटिव स्टफ, ठीक है ना? या तो इट्स नॉट अ बिग डील। या थैंक यू। Shiva wants to know, am I? I'm absolutely fine, beta. I trust the same at your end. God bless. Anurags, I want to go for service SEO commission. I have 2 more years to prepare. What should be my strategy? My strategy में सबसे important काम है हमारा, आप guidance program join कर लो. And I presume you got internet facility and you are in a position to send us written work. बिकॉज जनरली सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स के 2 मेजर इश्यूज होते हैं, एक अंग्रेजी और दूसरा जर्नल। तो उनको हम आपको हेल्प करेंगे रिजॉल्व करने के लिए, बाकी तो आपका एफर्ट है। टाइम है आपके हाथ में, ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन आवर लॉन्ग टर्म गाइडेंस प्रोग्राम एंड वी शुड बी एबल टू। ठीक है बेटा? या थैंक यू अनुराग। Gautam, sir, is putting so much effort for us, and there is only 3, 4 lines commenting. Don't get bothered, these are minor things. I am not overly concerned by such things, but thanks for being concerned. You do your bit, यार. आप अगर सक्सेसफुल होते हैं तो आई एम हैप्पी एंड दैट makes my day and makes my life happy. Right? So long as I can make some positive contributions to the society, it's satisfying in itself. Right? Yeah, we call it, intrinsic motivation. Huh? That's what it is. हमारा बुक में इसके ऊपर लिखा है, ब्लॉक सिंस आई एम अ पर्सनालिटी डेवलपर, आई डील विद ऑल दीज थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी and they apply to me as well as anyone else. Okay. Yes, sir, I'm confident, but my parents take a lot of stress, always question me how to handle that. Well, that would happen. That would happen. You have to live with these things. And you have to block these things out. क्या करोगे? नीरज चोपड़ा ने जब जैवलिन फेंकना है, he knows pressure is there. पिछली बार गोल्ड मेडल जीता है, पूरा सोसाइटी का सबका प्रेशर है, फाउल थ्रो भी हो गई है। He has to remain calm, block out all these thoughts, get his focus on to visualize his run up, visualize his throwing action, do the stepping correctly, get the arm in the right position, and accelerate the javelin the maximum possible thing. That is what we have to do. Same thing Bumrah has to do when he bowls, or Virat Kohli has to do when he bats. Pressure सब होता है, but you got to focus on the things in hand. And then माइंड 2-3 चीजों पे फोकस कर ही नहीं सकता, तो उस पर फोकस करोगे आप एक्शन के ऊपर, तो इन चीजों से दिमाग अपने आप, ठीक है? That's what you should do. Yeah, thank you. How to avoid phone addiction and distraction, even WhatsApp. We keep talking of these things. Now, recently we have got Sunita Madam has joined up with us.
She has taken some classes on these things like procrastination, these distractions and things like that. Do listen to those. बाकी हमारी बुक में हमने इन सब चीजों की बात की हुई है। बात ले दे के फिर वही आ जाती है आपकी मोटिवेशन कैसी, ठीक है ना? तो वो है मोटिवेशन ठीक होगी तो प्रॉब्लम नहीं है। हमने विनिश फोगट की बात की, कितनी डिफिकल्टीज थी उसके साथ, बट मोटिवेशन थी, बर्निंग डिजायर वाज देयर टू अचीव, तो शी डिड। ये है, कम होगी तो फिर बात कम रहेगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, बट बेसिक इशू हैज टू डू विद मोटिवेशन एंड दैट इज इंटरनल। बाहर से कोई डाल नहीं सकता मोटिवेशन का चिपना। तो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है बेटा, थैंक यू। Ankit, I scored 63% in 10th and 69% in 12th. And my reason is I used to procrastinate studies at that time. Is this answer valid? I played football in local tournaments as well. देखो, पहली बात ये चीज कि आप फुटबॉल खेलते थे, ये एक रीजन है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ये बकवास है। Please don't get this stupidity into your head and do not try to give this justification to anybody because this justification is absolutely bullshit. Don't do that. ठीक है ना? आपका रीजन यही है कि आप टाइम वेस्टर थे, आप मोटिवेटेड नहीं। That is the truth. Accept it. Accept it yourself internally and accept it externally also in front of the interviewing officer. That will show that you are honest and you also have the courage to accept your shortcomings, which is a good quality. But thereafter, accepting this is not good enough. You have to improve now and stop wasting time. Get clarity in understanding of your academics now and work sincerely. Then things will start improving. And so that will get you success. You are young now. What time has it given? That is what you should be doing. Dishonesty, covering up, and all are not going to help. These are the things which a lot of coaching academies people and all talk about. No Frills Academy is very different. We don't believe in all this trash. We believe in sincere, honest, hard work, and open and transparent contact. Fine? Yeah. Thank you. How to justify 2 years gap? No, you don't have to justify. You accept that you have wasted time. And as I answered just prior to this, stop wasting time now and utilize it properly. That is the thing. What has happened in the past cannot be changed at all. Accept it and move ahead now. Fine. Yeah. Thank you. Sahil Khan, can you give interview link with Arjun? I'm not able to find it. Thank you. Yeah, you get in touch with Yogita Madam, which is through our number on the website. She will help you locate that. Do or die routine है उसका title. Should be able to locate it. Yogita Madam will help you. Fine, beta. Yeah. Okay, Sahil. Ritik. Good evening. How are you? I got distracted because of single individual at house. Considering the stress, though I revert back to the track as soon as possible, but pursuing the journey alone gets challenging. Yeah, these are there. I accept that we are human beings. I mean, I have faced all these challenges myself. So ऐसा कुछ नहीं है. We are not, robots. तो फर्क पड़ता है, दिक्कतें होती हैं. I have served in high altitude areas. I have been in isolated locations, stuck up in one particular place and all that. हो जाती हैं चीजें. But you have to see as to what you can do at that point of time. And that is what it is. I mean, for me, the biggest challenging time was about what 10 days I was in ICU when I had COVID and oxygen lag raha tha and I was
in a very bad shape. पता नहीं था बचूंगा नहीं बचूंगा. The only I couldn't even read and all that, and नींद नहीं आती थी. I was badly troubled. So backache, backache, other stiff. Only thing I have to say कि यार let me try and do what best I can do to help God save me. अपना जो जितना एनर्जी है उससे खा लूं थोड़ा बहुत खिचड़ी चिड़ी जो खाई जा सकती है. ट्राई टू टेक लॉन्ग ब्रेथ्स. ऑक्सीजन ऑक्सीजन जितना है उसको वो यू नो टेक इट वेल. अपने को हाइड्रेटेड रखो एंड ऑल दैट एंड कीप होपिंग फॉर द बेस्ट एंड थिंक दैट आई नीड टू लिव फॉर द सेक ऑफ माय फैमिली एंड ऑल दैट. These were some of the thoughts which kept me motivated. You can devise your own plans. How to practice for SSB. प्रैक्टिस है ही नहीं ना एसएसबी का कुछ. द आइडिया इटसेल्फ इज रॉन्ग. ये तो कोचिंग एकेडमी ने कर रखा है ना कि एसएसबी की तैयारी बस साइकोलॉजी टेस्ट करो, प्रैक्टिस बल्ली पट्टा लो, गांठे बांधो, फिर इंटरव्यू के सवाल देखो क्या है, सीआईक्यू 1 2 3 उनके आंसर्स रजिस्टर में लिखो, अपने दोस्तों से अप्रूव कराओ, मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करो, फिर उन आंसर्स को रटो एंड देन गिव स्मार्ट रिप्लाईज एंड ऑल दैट. It is all these things are not needed at all. This is all there's senseless ways of preparing as far as I am concerned. I advise you people to focus on four things: your academic knowledge, your communication skills, your physical fitness, and your general knowledge. इनको ठीक-ठाक रखिए and get an idea कि एसएसबी में क्या होने वाला है, ओआईआर, शोआईआर and all that. वो हमारे बुक, हमारे यूट्यूब से आपको मिल जाती है information. That is all what you need. And to get selected, you should be solid overall in life. It's a holistic test of personality. So what you are in your routine life, a sample of that only will emerge. So make that strong, and then your chances of selection will improve. This SSB approach, coaching academy वाला ना कि SSB की तैयारी करना is basically trying to manipulate your way through, which is doomed to fail. It's not going to work because faking will not help. Your true nature, your instincts, and all will emerge under the test conditions. And in any case, the assessors are experts in their fields and experienced. तो वो होगा नहीं. तो आपका solution यही है. There's nothing like SSB की तैयारी. तैयारी है जिंदगी. If you are a student, be a good student. With that, communication skills, general knowledge, fitness ठीक रखिए. And if you are a worker, be a good worker. With that, अंग्रेजी, physical fitness, general knowledge ठीक रखिए. That's it. Yeah, thank you. Sir, different psychologists tell different things about what to do, whom to follow. Ah, see, I will not legislate. You have to take these decisions yourself. आज की डेट में आप ये देखिए, हिंदुस्तान की सरकार है, मोदी साहब महा के झूठे आदमी हैं, होम मिनिस्टर साहब महा के झूठे आदमी हैं. अभी पार्लियामेंट के रिसेंट आप उसमें देखिए, एक चीज एग्जांपल ले लेते हैं यार, अग्निपथ जो स्कीम, मोदी साहब ने कुछ बोला पेंशन शेंशन के बारे में, भी जो नॉनसेंसिकल पेंशन है ही नहीं इसमें, तो पता नहीं वो क्या बोल रहे थे. तो दैट एब्सोल्युटली ट्रैश शीट ऑफ. फाइन, ये हो गई. डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला कॉम्पनसेशन 1 करोड़ का मिलता है. राहुल गांधी ने बोला कंटेस्ट क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या है, निकल के क्या आया, क्या था, उनको इंश्योरेंस का मिला था, कॉम्पनसेशन नहीं मिला था. तो वो झूठ बोल रहे थे. फिर क्या हुआ, एक उनका और एब्सोल्युटली यूजलेस गाय अनुराग ठाकुर, वो टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिसर भी है, वैसे कुछ मेजर सेजर है. उसने बोला 100% गारंटीड है जॉब जो है आफ्टर 4 ईयर. वंस अगेन एन एब्सोल्यूट लाई. तो अब जो है, अच्छा ये है, अब इन्हीं का जो है माउथ पीस है गोदी मीडिया, इनका मालविया, आईटी सेल, फिर गोबर भक्त, तो इतना ज्यादा फॉल्सहुड इज बीइंग प्रोमोटेड ना. अर्णब गोस्वामी, मोदी के हिसाब से हिंदुस्तान, हिंदू बिल्कुल खतरे में है. पहले नहीं था खतरे में, मोदी के आने से खतरे में होगा, और मोदी अकेला ही बचाने वाला है हिंदुओं का. आपको ये आइडिया, बट लेकिन हिंदुस्तान में इतने बेवकूफ है, दे बिलीव ऑल दिस थिंग.
At least I think at least 15% of Hindus are such fools. They believe this nonsense. तो अब जो है भगवान ने आपको दिमाग तो दिया है ना, ये दिया ना, उसको यूज करिए। और कॉन्शियस आपके पास भी है, आपको पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मैंने एग्जांपल से बताया आपको कि ये अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो यू हैव टू डिसाइफर। अब सेम आप लॉजिक आता है साइकोलॉजिस्ट की। कोई कह रहा था आप कहानी रट लो, ये कर लो, ऑल दैट थिंग। आई लर्न दीस थिंग्स फ्रॉम यू पीपल ओनली। कि किसी ने आप ने कोई किताब लिखी है, किसी ने कुछ और लिखा है। आप रैशनली देखो क्या आपको ठीक लगता है। आप सिंस यू आर अटेंडिंग माय सेशन, it gives an indication that you would have found some of my thoughts appealing to you. That's why you come here. मैं ये नहीं कह रहा मेरा कोई भगवान से कनेक्शन किसी का भी नहीं है। मेरे पास कोई प्रोफाउंड नॉलेज नहीं है। मैं बड़ा ऑर्डिनरी आदमी। जस्ट दैट आई एम ओल्डर देन यू। आई वर्कड इन द सिलेक्शन सिस्टम। दैट्स अबाउट ऑल। पर आप ये देखिए कि जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर वो आपकी रैशनैलिटी को अपील करती है तो ठीक है, गो बाय इट। एंड यू फाइंड कि जो मैं बात बोल रहा हूँ उस यू हैव अ बेटर लॉजिक देन दैट, देन प्लीज इग्नोर द आइडिया व्हिच आई एम प्रमोटिंग। बिकॉज़ I can be biased, I can be wrong in my understanding of things. तो that is how society is progress ना। तो आपको उस पे चलना है, लॉजिक से चलिए आप। दैट इज व्हाट इट इज। तो यू कैन फाइंड आउट। क्योंकि हम सबके पास लॉजिक है, भगवान ने रैशनैलिटी दी और कॉन्शियस दिया। इन दो चीजों का आप इस्तेमाल सही करिए तो यू विल गेट योर आंसर। इतनी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, थैंक यू। I have two more NDA attempts left and I'm confident about my parents. अच्छा जी, तो saturation point. अरे नहीं, don't worry, don't parents तुम अपना फोकस रखो यार। Sir, ठीक है ना? please read Things out. will work out. Sir, different आज ये हो गया। I completed my engineering last year, gave 3 CDS attempts but couldn't clear. Right now preparing for April CDS with job, SSC Tech notification also out and I'm considering to attempt it. Yeah, go ahead, ये करिए आप। बट रिटन एग्जाम पास करना चाहिए भाई। उसके बिना नहीं बात बनने का है। ठीक है ना? यू डू इट ऑन योर ओन इज गुड। नहीं है तो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करिए। यू नो विद कंसिस्टेंट इंटरेक्शन विद peers who are motivated and working hard and systematically, you'll get a good environment to improve। बाकी कुछ नहीं है, मैं आपसे भी किया जा सकता। So that's what it is. Okay. सर, एक पिक्चर में एक लड़का कुछ छीन के भागते हुए दिख रहा था। लोग उसके पीछे भाग रहे थे, तो मैंने उस पे पर्स छीन के भागने की स्टोरी बनाया तो क्या? हाँ, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एन आइडिया कि किसी का पैसा पर्स लेके भागा होगा। पर जो भाग रहा है उसको मेन कैरेक्टर मत बना देना भाई। चोरी जो कर रहा है, जो पकड़ने वाला है उसको मेन कैरेक्टर बनाना प्लीज है। दैट्स अ सेंसिबल आइडिया। फाइन, या फाइन, दैट्स इट, थैंक यू। Sir, sometimes after 8, 90, 80 stories, when next pictures are negative, the mind suddenly gets blank। भाई इसका आंसर मेरे पास नहीं है भाई, कि माइंड ब्लैंक हो गया क्योंकि मेरा नहीं हुआ कभी, तो मैं कैसे आपको बताऊं। भाई कुछ देखोगे, कुछ समझ इंटरप्रेट करके कुछ तो आइडिया आएगा, उसको यूज करिए। ब्लैंक होने का आई डोंट नो। अगर ब्लैंक स्लैंक आप हो जाते हैं तो आई डोंट नो हाउ यू फेस अप टू एनिमी फायर एंड ऑल दैट। यार फौज में जा रहे हो, लड़ाई वड़ाई लड़नी होगी, फाइटर पायलट बनने की सोच रहे हो, तो कैसे होगा ये? आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस। मत कुछ और काम कर लो यार, फौज में मत जाओ यार। यू विल नॉट बी वेरी वेल सूटेड फॉर डिफेंस सर्विसेज अगर ऐसा इशू है। प्लीज दैट्स इट, या थैंक यू। My question is, are 2 months at NFA enough? No, I won't know. I cannot legislate. It all depends upon your motivation, your present level, and how you progress. वो है। होने को 2 महीने में हो सकता है, नहीं होने को थोड़ी 2 साल में भी ना हो।
तो ये आपके ऊपर है बेटा, बट इट विल बी वर्थ इट गिविंग इट अ ट्राई. But the most important thing remains your motivation to work systematically as it. वो करेंगे तभी प्रोग्रेस होगा. मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, ठीक है ना? एफर्ट आपको करना पड़ेगा. तो आप जॉइन अप करिए. इट इज वर्थ टेकिंग अ ट्राई. फाइन, या थैंक यू. स्टडी चैनल सर, एक पिक्चर में एक अच्छा ये तो हो गया. In September, it will be a year of doing daily diary writing. Okay. I observed a trend from my two diaries that I am anxious and stay worried more on what I don't have than what I have. How to be vivacious. Uh, 50% of the battle is already won because you have realized this thing. Realization means half the battle won. तो एटीट्यूडनल चेंज लाइए अपना. वही हाफ एम्प्टी हाफ फुल वाली चीज है. तो डेली जैसे हमारे सुनीता मैडम भी बोलती हैं, एवरी मॉर्निंग प्रे टू गॉड टू व्हाट ऑल गुड ही हैज गिवन यू, कि तुम्हारा आंख कान सब ठीक है, बॉडीली फंक्शन सब ठीक ठाक है. आई मीन सो मेनी पीपल डोंट हैव दीज थिंग्स. आपका दिमाग ठीक ठाक चल रहा है, उसको भी यूटिलाइज ही करना है ठीक से. तो आई मीन इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई है आपके पेरेंट्स ने. आई मीन यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, दे आर इन्यूमरेबल. तो उनको करिए तो आपको लगेगा यार मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, बदकिस्मत नहीं हूँ. उसके बाद जो है देन यू विल बी इन अ हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड एंड देन स्टार्ट वर्किंग. आई मीन यू कैन डिवाइस योर ओन मेथड्स. आई मीन चीजें तो कितनी सारी हैं. ठीक है बेटा, या गॉड ब्लेस. Hemant, I will buy 2 4 months course of NFA. I have some doubt regarding this. How will things happen on daily basis like activities, psychology, mock interview? Ah, very good question here. Okay. Things is like this. Of course, we have got a video on a YouTube channel where we have explained exactly what all will happen when you join SSB or not SSB, NFA. Anyway, आपने देखा नहीं होगा वो, कोई बात नहीं है. देखिए क्या होगा जब आप ज्वाइन करेंगे. सबसे पहले मैं आपका एक इंटरव्यू करूंगा. In that, I will assess after you have filled up a form similar to the PIQ form. It's a little more elaborate. तो उसमें मैं असेस करके आपको बताऊंगा कि क्या-क्या चीजें ठीक-ठाक हैं और क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है. I will also give you a suggested roadmap for improvement. ठीक? Based on that, you will have to prepare your daily routine for improvement. And in the second step, you will give me these things. Daily routine आप बना के देंगे. And you will give me a series of psychology tests. From that, I may infer some things which I did not assess during the interview. So that we will incorporate in the assessment and we'll devise methods to improve upon any shortcoming if it gets noticed. तो ये है. नहीं तो मैं आपको कुछ जनरल एडवाइस दूंगा. साइकोलॉजी टेस्ट करने के बारे में हम एक एक एसआरटी ये वो सब डिस्कस करेंगे आराम से डिलिबरेट. तो ये हो जाएगा. उसके बाद में जो आपने जो रूटीन बनाया होगा उसको हम अप्रूव कर देंगे, डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे. देन यू कीप फॉलोइंग द रूटीन एंड वंस एवरी वीक यू विल बी डिस्कसिंग योर प्रोग्रेस. कि क्या-क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है. एंड विद दैट वी विल रियलाइज वेदर थिंग्स आर मूविंग ऑन ट्रैक और नॉट. In case some alterations in the plan are required, some additions or things like that, we will be doing because we're a normal chat हम करते रहेंगे weekly. And other things what will be happening is that daily you will be involved in group activities जहाँ पे आपका जो है GD, lecturate, PPDT, group planning exercise इस तरह की चीजें आप ग्रुप में करते रहेंगे अंडर ग्रुप कोऑर्डिनेटर which I will not be supervising. At the group level you keep doing.
Once a week, I'm holding joint sessions on Sundays where we clarify things of a common nature. कोई green out हुआ, conference out हुआ, क्यों हुआ, कोई successful हुआ तो क्या हुआ, क्या lesson हमने उससे सीखा, or any other thing which is of common interest, where we keep having talk on personality, development issues, geopolitics, and all that. Next Sunday we are planning to have one major who was involved in Kargil war कि क्या कुछ हुआ and all that. तो इस तरह की चीजें हम करते रहते हैं based on the needs of the students. Now one thing you should be very clear at the outset. क्या होता है आप लोग का साइकोलॉजी साइकोलॉजी थोड़ा साइकोलॉजी तो आप साइकोलॉजी टेस्ट सोचने लगते हैं आपका एटीट्यूड हैज गॉट शिफ्ट by the information you get on the net, and that information is shaped by the coaching academy. अब कोचिंग अकेडमीज का आउटलुक टुवर्ड्स एसएसबी है क्या है कि मॉक उसका करिए रिहर्सल एक बार कर दिया दोबारा करिए दोबारा करिए नाउ इफ यू कम विद दैट माइंडसेट तो आपको प्रॉब्लम होती है मेरे फंक्शन क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये होलिस्टिक टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। एक इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, 6 इंटरव्यू, 10 इंटरव्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। You will not benefit in any way, nor will practicing the psychology tests and GTO things and all that is going to be of great use. बट देन अब कोचिंग वालों का माइंडसेट ये है तो अगर आपका ये माइंडसेट चेंज नहीं होता है तो आप क्या करेंगे एक दो हफ्ते बाद आप मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे सर क्या आप मेरा एक मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं एंड देन यू विल इरिटेट मी बिकॉज मैं नहीं लूंगा क्योंकि उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है कोई आपका असेसमेंट चेंज नहीं होने वाला 15 दिन में क्या चेंज हो जाएगा जो आप वो मैंने आपको बता दिया। आपको रोड मैप समझाया कि ये है इम्प्रूवमेंट करने का, अब आपको फोकस उस पे करना चाहिए। पर लेकिन क्योंकि आप कोचिंग अकेडमी माइंडसेट से आओ तो आप कहते हो कि नहीं मॉक इंटरव्यू कराते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट और एसआरटी करके देते हैं। वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो जो अगर आपको ये चीज़ों का शौक है, जो बहुत लोगों को होता है, आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट यू। आई मीन शौक है भाई एसआरटी करना है, स्टोरी लिखनी है, इंटरव्यू देते रहना है, तो फिर आप मेरा प्रोग्राम जॉइन मत क्योंकि अगर आपका होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका एजेंडा नहीं है, आपको यही-यही चीज़ें बार-बार करनी है, तो प्लीज़ आई एम टेलिंग आउट द आउटसाइड डोंट जॉइन नो फ्रिल्स अकेडमी क्योंकि यहाँ मैं ये नहीं कराऊँगा। एंड आई हैड वन रीसेंट केस आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स बैक when that boy was there, he got after me, mock interview कर लो, psychology test check कर दो, then his father got after me, and then I said, यार तुम you get lost please, है ना? I don't have time to waste with you because मैंने आपको समझाया, मैंने बुक लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा ये मेथड है। आप समझ नहीं रहे हो एंड मे बी फॉर व्हाटएवर रीजंस आप आई मीन जैसे ही आपका ब्रेन है मिला हुआ, जिस हिसाब से आप सोचते हैं, आपको लगता है यही करना ठीक है, तो मैं तो आपके हिसाब से करना चेंज नहीं कर दूँगा, देन वी विल बिकम लाइक एनी अदर कोचिंग अकेडमी, तो वो मैं करूँगा नहीं, ठीक है ना? तो हमारे होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, वो हम करेंगे। इस हिसाब से हमारा काम चलेगा, ठीक है बेटा? आई होप यू अंडरस्टूड इट। हमारा वीडियो देख लेना, इट विल क्लैरिफाई दिस इज़ व्हाट थैंक यू। Sir, I was not able to read novel this week because of exam, but completed The Serpent's Revenge by Sudha Murthy as much as possible. तो क्या प्रॉब्लम है? यार किसी चीज को जबरदस्ती लेके मत चल लो यार, ये बहुत बड़ा बेवकूफी का आइडिया है कि तुमने पीआईक्यू में हॉबी लिख दी, रीडिंग है, तो अब एग्जाम है तो उसमें तुमको ये बुक रीडिंग करनी है। ये बेवकूफी की बात है। मैं इसका एग्जांपल एक देता हूँ। मेरे पास एक गधा आया था, आई मीन ह्यूमन बीइंग बट माइंड वाइज ही वाज एन एस। तो उसने बोला सर मेरा जो है बाइक राइडिंग मेरा हॉबी है और मैं करीब 1 साल से बाइक राइडिंग पे नहीं गया, तो क्योंकि अब मेरा एसएसबी नजदीक आ गया है, तो मुझे बाइक राइडिंग के लिए चला जाना चाहिए। मैंने कहा यू आर एन एस, आई डोंट थिंक यू डिजर्व टू गेट सिलेक्टेड। वो मेरा स्टूडेंट था।
माइंड यू, एंड ही नेवर गॉट सेलेक्टेड, फाइन। तो दिस इज व्हाट, तो इस तरह की बेवकूफियां नहीं करनी है। आपको जब टाइम मिलता है उसके हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है बेटा, देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू। Thanks, Ritik. Thank you, sir, for your suggestions. May God keep you and everyone home healthy and fine. Thanks, beta. God bless. Thank you so much. It's very finished reading a book, very valuable. Will do my best to implement the teachings mentioned there. I'm privileged. I just need to grind and focus now. Yeah, good luck, beta. God bless. What is actually general awareness? General awareness. सामान्य ज्ञान. सामान्य ज्ञान is a comprehensive term. What you should understand is it is related to your location. Let us say, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, लाइक आई एम एन एनडीए एस्पायरेंट और मैं मेरठ का रहने वाला, ठीक है ना? तो मेरे लिए क्या होगा, रिलेटिव क्यों है? मेरे को मेरठ के बारे में पता होना चाहिए, क्या है मेरठ में, कितना बड़ा शहर है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या है यहाँ पर, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, ज्वेलरी वालों का काम है, क्या है, एजुकेशन है, आई शुड हैव एन आइडिया। तो ये हो गया मेरठ। उत्तर प्रदेश का आइडिया होना चाहिए क्योंकि स्टेट है मेरा, फाइन। तो ये हो गई बात। देन क्योंकि हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, तो फॉर मी द वर्ल्ड शुड बी लुक्ड एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। मेरठ, यूपी, देन इंडिया, है ना? इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की मेजर प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, these like things, per capita income not rising, problem from Pakistan, China, problems likely to occur from Bangladesh, influx हो सकता है, all that. तो now then इंडियन सिटीजन बाहर बाहर भी रहते हैं। अब यूक्रेन रशिया वॉर इतनी डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रही, पर लेकिन अफेक्ट कर रही है क्योंकि रशिया से हम ऑयल ले रहे हैं, रशिया के वेपनरी हमारे पास बहुत है, तो सिग्निफिकेंस आ गई, ठीक है ना? यूएस इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, सुपर पावर है, लोग जा रहे हैं वहां पढ़ने के लिए, these are the things. तो ये रेलेवेंस आ गई, तो इंडिया सेंट्रिक रख के चीजों को ठीक। अगर आप ये देखो कि जैसे अब मेरे जैसे आपको मैंने बोला मैं एनडीए का एस्पिरेंट हूँ, मेरठ का रहने वाला हूँ। आप मेरे से बात किया, आपको पता चला ये मेरठ के बारे में ठीक-ठाक जानता है, यूपी के बारे में इसको नॉलेज है, इंडिया की ज्योग्राफी ठीक-ठाक समझता है, इकोनॉमी का भी इसे आइडिया है, रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज भी ठीक-ठाक समझता है, सुपर पावर्स से क्या है ये समझता है, और ये प्रॉब्लम्स आजकल क्या आ रही हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, बजट में क्या आया, वो सही है, नहीं है, क्या अच्छा होना चाहिए था। अगर आपको कोई ऐसा मिले एनडी का एस्पिरेंट, तो आप उसकी जनरल नॉलेज को क्या बोलेंगे? ये ठीक-ठाक है। तो अगर ठीक-ठाक आपको लग रहा है ये है, तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है बेटा? थैंक यू। इम्पोर्टेंट टॉपिक और एसएसबी लेक्चर, ये आया सवाल। कुंजी मास्टर, आई लव कुंजी मास्टर। के जो है मैं 20 एसएसबी में जाने वाला हूँ, वहां जीटीओ कौन से इलेक्टोरेट के टॉपिक डालता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है वो कौन से सवाल पूछ रहा है। कुंजी मास्टरों के मैं सख्त खिलाफ हूँ जिंदगी में, उनको सक्सेस नहीं मिलती है। कुंजी मास्टरी अप्रोच छोड़ दो, ब्रॉड बेस्ड नॉलेज अपनी इंप्रूव करो, जो मैं अभी बता रहा था जनरल नॉलेज। ठीक है? Don't go into this trap. If you have this outlook of पूंजी वाला, then you will be exactly the same guy जो नीट में करोड़ रुपया देके पता करेगा पर्चे में क्या आने वाला है, उसका आंसर देके मैनिपुलेट करके सक्सेस लेगा, और जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। वो ना टॉप करने के बाद भी वो घटिया डॉक्टर बनेगा, उसके बाद भी मैनिपुलेट करेगा। प्लीज, आई डोंट अप्रूव ऑफ सच पीपल। प्लीज चेंज दिस आउटलुक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इट विल डू यू अ लॉट ऑफ गुड इन लाइफ। फाइन, या थैंक यू। समथिंग अबाउट जैग, मेरा वीडियो देखिए, जैग के ऊपर बहुत कुछ डाला है, ठीक है ना? जैग एंट्री के ऊपर हमने एग्जांपल दे रखा है, 70 डे का प्रिपरेशन प्लान वगैरह। हैव अ वर्ड विद योगिता मैडम, शी विल गाइड यू टू दैट वीडियो, वो आपको मिल जाएगा। ओके,
सर क्या एसएसबी कैडेट्स के रिकमेंड होने के चांस ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू दोज हु आर नॉट एसएसबी? एसएसबी कैडेट्स, एनसीसी की शायद आप बात कर रहे हो। नो नो, दिस ऑल बुलशिट। आपकी कॉम्पिटेंस इज व्हाट इज रिलेवेंट, या ओके। जयवंत सर, विल बैकलॉग ड्यूरिंग ग्रेजुएशन सीवियरली अफेक्ट? देखो भाई, सीवियरली अफेक्ट तो ऐसा है, बैकलॉग आपने लिए तो आप इनकॉम्पिटेंट और इनसिंसियर थे, ये आपका हिस्टोरिकल ट्रूथ है। इसमें झूठ मत बोलिए, एक्सेप्ट करिए, पर अब सुधर जाइए तो कोई आपकी हिस्ट्री को आपके अगेंस्ट ज्यादा होल्ड नहीं करेगा। और अगर आप अभी भी नहीं सुधरते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप मैनिपुलेट करके निकल जाएंगे, जैसे अदानी अभी तक निकलता रहा है, तो अदानी भी जिंदगी भर निकलता नहीं रहेगा, फंसेगा एक दिन। आप भी किसी ना किसी दिन जरूर फंस जाएंगे। तो ये आउटलुक मत रखिए, आप सुधार कर लीजिए। अदानी को भी यही सलाह देता हूँ कि आप सुधर जा, अब हेरा फेरी करनी छोड़ दे। एंड सेम सलाह आई गिव टू मोदी एंड शाह। या, थैंक यू सर। टुडे आई गॉट अगेन स्क्रीन आउट। तो हमारे पास आ जा भाई, ज्वाइन कर ले हमारा गाइडेंस प्रोग्राम, बट बी प्रिपेयर टू वर्क, ठीक है? विल हेल्प यू। थैंक यू sir. Scoring 86.6%, 10, 81%, all fine. Yeah, it's absolutely fine, there's no problem at all. Doing anything in sports, वो मेरे physical fitness हमारा ठीक होनी चाहिए, don't get bothered. Sir, is money mindedness a cause of rejection in SSP? नहीं, मनी माइंडेड तो यार जिंदगी चलानी है, पैसे की जरूरत तो है, वरना लाइवलीहुड एंड स्कैर्स रिसोर्स है मनी, और पावर्टी है बहुत ज्यादा, तो इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन। जो बेसिक ह्यूमन नीड्स में तो मनी इज वेरी सिग्निफिकेंट, तो इट विल नॉट बी, और डोंट गेट concerned, there's nothing wrong with it. How can I develop OLQs in my daily routine? Don't bother for OLQs. Improve upon the four things that I said. That is going to help you. वो ठीक ठाक होगा तो OLQ भी ठीक हो जाएगा. Fine. Yeah, thank you. Sir, क्या SSB cadets के वो can we get permanent commission if you join through CDS OTA? Chances have reduced a lot. You know, now पहले होता, now it will become, it would be already pretty difficult, and it will become increasingly difficult because we are wanting officers to be in junior ranks and not that many in senior ranks. So permanent के chances कम हो जाएंगे. Arvind Charan, yeah, you can say that it is also different whether your priority is money or country. Okay. Money, country, चलो ठीक है. Fine. Sir, in doubt, considered humbleness or act of no confidence. Please answer this. नहीं यार, firstly, humbleness is not a correct word. अंग्रेजी आपकी कमजोर है. The word is humility. Humbleness word नहीं है ना, तो अंग्रेजी तो डेफिनेटली सुधारिए. अब डाउट तो होते हैं, आपको जो है वो पूछना चाहिए आपको. ये जो है ना, दिस आउटलुक ओनली कि साइकोलॉजिस्ट क्या सोचेगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा, वो आपको जिंदगी में रिजेक्ट ही करवा देगा. तो यही सोचते रह जाओगे, ना पूछोगे ना कुछ करोगे, तो कॉन्फिडेंस की कमी तो तुम्हारे में है ही है. एक चक्कर में क्यों पढ़ते हो, जो है पूछना है पूछ लो. तो दैट्स व्हाट. Arvind, I was asked a lot of questions about my career choice and why I want to join the Air Force and how I approach money and things like that. Does it mean they found me? अरे यार, सेलेक्टर का बाप बनने की कोशिश मत करो, उसको करने दो अपना काम, तुम अपना जवाब दे दो ना सीधा सीधा जो है, बस दैट्स इट. डोंट गेट इनटू complications and all that. Yeah, it will not help you. Okay. Sir, after being honest and true in interview of a Coast Guard, not recommended what to do for next interview. Again, remain honest and transparent, but do improve yourself in the four things that I said. Don't try to manipulate your way through dishonesty. It is not going to work as per me. Fine. That's it. Yeah. Thank you. Okay.
जिन चीजों से परमानेंट इरेक्शन हो सकता है मेडिकल में, ओ मेडिकल का जानकारी मेरे पास नहीं है, यू कंसल्ट द ऑफिशियल वेबसाइट और सम डॉक्टर. ओके ललित, recently got not recommended from 3FSP, found that my TAT, अरे यार TAT वेटी कुछ ऐसा नहीं होता है. Don't get concerned about these things. Improve upon the four things that I said. और डाउट आ रहा है कि क्या इम्प्रूव करना है, कैसे करना है, ज्वाइन आवर गाइडेंस प्रोग्राम. ठीक है बेटा, या दैट्स इट. थैंक यू. Mansa Reddy, I got 7 points in math, in all 9 Telugu, 10 points. So do I show this was weak in math? नहीं weak तो तुम अंग्रेजी में तो हो ही डेफिनेटली, क्योंकि आप हफ्ते क्या वीक की स्पेलिंग कमजोर वाले वीक में डालते हो, तो ये तो सुधारना जरूरी है आपके लिए. बाकी आई वुड नो मार्क्स आर्क्स से आई डोंट मेक मच ऑफ एन असेसमेंट बिकॉज मार्क्स आर्क्स का रिलायबिलिटी बहुत कम है. We assess by talking. So if you join a program, Mansa, then I will speak to you and we will do assess as to what your competence is and then make out a comprehensive plan. ठीक है ना? तो आप आ जाओ हमारा प्रोग्राम ज्वाइन अप. अंग्रेजी डेफिनेटली नीड्स इम्प्रूवमेंट, बाकी जो होगा वो हम बताएंगे. But you have to be sincere and motivated to work hard. Okay. Sir, 18 SSB Allahabad washed out, or which batch? There were no previous recommended candidate batch also. चलो हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, हो जाता है. How to answer tough questions in interview? There's nothing tough. तब तुम आंसर करो यार अपना हिसाब से. Yeah. I 22 times appeared SSB. It is my last attempt. Please help me. Last pressure मत ले ले. मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर ले, बट डोंट टेक दिस प्रेशर. प्रेशर लेगा तो रिजेक्शन ही होगा. ठीक है ना? दैट्स इट. या थैंक यू. Himanshi, I have been seeing your videos since a long time. I have seen that you are brutally honest about things, but is it okay for me to be like that? You have to decide your course, Himanshi, my dear girl. Uh, I'm myself, you be yourself, the way you are. What suits you? You see, if you feel a particular quality you aspire to inculcate, then do it. If you feel it is not becoming of you, then do not. We should not try to become clones of each other. We should be, you are Himanshi, I am Nehru, that's it. Let's be ourselves and be happy with whatever. And let's not be needlessly proud and all that. People use a lot of these terms. Let's be happy the way God made us and try to improve whatever way we want to. Thank you. Okay, sir. The dark user, how to avoid shin pain. मैंने लिखा है यार बुक में, काफ मसल स्ट्रेंथन करो, रोड रनिंग मत करो, सॉफ्ट ग्राउंड में भागो. ठीक है, so that's it. हो गया? Okay, I think we've had a good session, been able to answer a lot of questions. I hope my answers have been satisfactory and your queries have been settled. Please do keep attending our sessions. Next Sunday, we will have the Instagram session, not YouTube. You can join us there. So that's it. Wish you all the best. Take care. Good night.